Hello guys, welcome to my YouTube channel. Currently, I have only C drive. I want to create another one new drive for this laptop. Okay, so first of all, go with the computer management, and after computer, go to the storage, disk management. So यहाँ पर मेरे पास सिर्फ C drive है. Let's partition this. Shrink volume. It takes few seconds to open. मुझे एक और डिस्क बनानी है 100 GB की. मेरे पास फ्री स्पेस है अभी 342 GB. ओके. Okay, so disk is available, shrink space is this, amount of space of the shrink is this. Okay, so हमें चाहिए 100 GB की डिस्क. तो कन्वर्ट करते हैं GB टू MB. हमें चाहिए 100 GB, राइट. तो 100 GB के अंदर कितने में? ठीक है, 1 लाख. जो 10,000 1 लाख MB. ओके, तो यहाँ लिखते हैं 2 3 4 5. ठीक है. लेट्स क्लिक ऑन श्रिंक. तो सी ड्राइव जो है स्प्लिट हो जाएगी. इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स. लेट्स वेट. ओके, सभी ये डिस्क जो है अनअलोकेटेड है. सो क्लिक ऑन द राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक ऑन नेक्स्ट. Just click on next by default. Okay, assign the values in the letter. I create a name D. Okay, of my drive. Okay, for these are by default settings. Click on next. Just click on finish. Okay, so my D drive is created. Let's check it out. Yes, my D drive is created with 97.6 GBs. Yeah, thank you guys.